Welcome back, guys. अब हम करेंगे pressure question 36 to question 40. Let's start. Question 36. Air is trapped in a cylinder by a piston. The pressure of the air is P and the length of the air column is 20 centimeters. The piston is moved outwards until the length of the air column has increased by 40 centimeters. The temperature remains constant. What is the new pressure? अच्छा, फॉर्मूला लगा लेते हैं। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अच्छा, व्हाट P1 तो सेम ही रहेगा इनटू ले अच्छा, हम वॉल्यूम को और कैसे लिख सकते हैं? लेंथ इनटू एरिया, राइट? एरिया इनटू लेंथ। अच्छा, इसमें जो है ना सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया which is, for example, this is the cross sectional area of the piston. This is, for example, this is the piston, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस इज नॉट चेंजिंग, while the length जो है ना इसकी पिस्टन की, that is changing। ठीक है ना? Length is changing, not the cross sectional area. So we can write this as L1 is equals to P2, और इसमें भी एक सेकेंड, A सेम रहेगा इनटू L2। अच्छा, एरिया बोथ साइड्स पे सेम है तो इट विल बी कैंसल, राइट? कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड का एरिया। वी विल बी लेफ्ट विद P1 L1 is equals to P2 L2, right? अच्छा, P1 एज इट इज लिख देते हैं। L1 क्या है? L1 इज द इनिशियल लेंथ, ठीक है ना, विच इज 20 cm, और इज इक्वल्स टू P2, एक सेकेंड, L2 क्या है? 60। अच्छा, अगर यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर यहां 60 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा? डिवाइड होगा ना, राइट? डिवाइड हो गया। P1 into 20 divided by 60. 20 divided by 60, I'm pretty sure is 1 by 3. अच्छा, is equals to P2. अच्छा, that means 1 by 3 P1 is equals to P2. That means अगर that means कि अगर P divided by 3 is equals to P2, ठीक है ना? P divided by 3 is equals to P2, which we can see in B. Very explained, well explained. Question 37. A long tube full of mercury is inverted in a small dish of mercury. The mercury level in the tube falls, leaving a vacuum at the top. ये vacuum है. When the atmospheric pressure decreases, which length decreases? अच्छा, when the atmospheric pressure decrease होगा ना, तब ना ये Q से जो R वाली लेंथ है ना, इसका वैक्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और ये जो लिक्विड है इट विल गो डाउन, ठीक है ना? लिक्विड नीचे जाएगा, लिक्विड नीचे चला जाएगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और वैक्यूम विल इंक्रीज, दैट मींस Q to R is decreasing, right? Q to R is decreasing. C is the right answer. Question 38. Different liquids are poured into 4 different containers. In which container does the liquid produce the greatest pressure at the bottom of the container? ठीक है ना? हम प्रेशर कैसे निकालेंगे? We'll get pressure by rho, which is density, into G, which is gravitational field strength, into H, which is depth। ठीक है ना? पहले वाले का प्रेशर निकाल लेते हैं, which will be P is equals to 1.3 into 50, actually wait, yeah, rho is 1.3, G is 10 into 50, which will give us P is equals to 650। उसके बाद कर लेते हैं हम अगले वाले का P का कर लेते हैं। 0 will get P is equals to
which is rho निकालें 0.8 into 10 into 80, from which we'll get P is equals to, निकाल लेते हैं एक दफा, 0.8 into 10 into 80, 640, yeah, 640. This will be 640, और उसके बाद थर्ड वन C का is equals to rho into G into H, which is 60. Pressure will be, एक सेकेंड, 600. आखिरी वाला 0 0.92 into 10 into 75, from which we'll get 750, and I think 750 into 0.92, which will get, pressure will be 690. 690. So what is the greatest pressure at the bottom of the container? As we can see, it's D. एक बार check कर लेते हैं, 38. D is the right answer. Question 39. A rectangular block of metal has weight 6 Newton. तो ये मैंने ब्लॉक ढूंढा है कहीं से, बस कहीं से ढूंढ मिल गया. इसका वेट जो है, इट विल बी 6 न्यूटन्स, राइट? इट विल बी 6 न्यूटन्स and measures 3 into 4 into 5. What is the smallest pressure that can exert? अच्छा, smallest pressure मतलब जो surface area, it has to be the largest. Pressure is equals to force divided by area, right? तो जितना बड़ा एरिया होगा उतना कम प्रेशर लगेगा, बिकॉज फोर्स इज कांस्टेंट. फोर्स इज गोना स्टे कांस्टेंट नो मैटर इन हाउ विच पोजीशन वी पुट दिस इन. अगर हम इसको फॉर एग्जांपल इस मुंह की तरफ फेस कर दें, राइट, अगर हम इसको इस मुंह की तरफ रखते हैं, राइट, इस मुंह की तरफ, तो द प्रेशर विल बी द ग्रेटेस्ट. बट वी नीड टू फाइंड आउट द smallest pressure, which we'll get by putting the block on the most amount of surface area which it can possibly be on, which will be this. ठीक है ना? अच्छा, इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं. कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस इज 3 4, इट इज 5. अच्छा, दिस इज 5 into 4. 5 into 4 हो जाएगा ना? You get area, force. 6 divided by 5 into 4 क्या होता है? 5 into 4 is 20, which will give us 0.3 newtons per centimeter cube, which is B. Hopefully it's B39. B is the right answer. Question 40. Two cylindrical vessels are joined together and filled with water as shown. Two cylindrical vessels है. How does the pressure at point X compare to the point at compare to the pressure at point Y and Z? अच्छा, X और Y are at the same level, therefore they are at the same pressure. They are experiencing the same pressure, right? Because pressure is dependent on two factors: rho, which is density, and H, which is depth. अच्छा, इनमें सेम ही होगा, बट X कंपैरेटिवली अगर X से Z को कंपेयर करें, Z और X को कंपेयर करें, Z will have much greater pressure because Z है ना, वो it is at a greater depth. Z एक greater depth पे है than X, right? So Z will experience lower, higher pressure. So in comparison, compared to Z, X lower pressure experience करेगा, ठीक है ना? It's exactly what I said, but in opposite terms. उसने पूछा compare to Z. अगर इसको कंपेयर करें Z का जिसका प्रेशर ज्यादा है, X का जिसका प्रेशर कम है, तो Z का प्रेशर ज्यादा होगा, तो कंपेरेटिवली X का प्रेशर कम होगा Z से. So C is the right answer. 40 C. Yes.
So I hope you enjoyed watching this video. Allah Hafiz.